Hello, good morning everyone. This is my first class here, so it's a new beginning here, right? So I will take your current affairs session with India and global affairs. You know, I will show you that केमिति कोन questions बनुची exam रे OCS ପାଇଁ जो level रे questions preparations दरकार सही preparations मु I am trying to harness that ना कहीं कहलो 2023 रे जो क्वेश्चंस आसीथिला से टाइम रे 2023 if you remember से टाइम रे कट ऑफ वाज अराउंड 48 despite having 683 पोस्ट remember 683 पोस्ट थिला लोगो तथापि 48 कट ऑफ जायतला तो द लेवल वाज वेरी हाई है ना तो किछि भी सब्जेक्ट क्रैक करियार अछि किछि भी एग्जाम क्रैक करियार अछि द की इज attempting difficult questions with ease जदि तुम difficult questions attempt करि देलो and difficult questions एमिति न कि तमे you are not माने you can't answer say options रे भी की किछ थाय माने you can eliminate options and can easily find the answer है ना तो मु कहू छी कि I will try to prepare so that तमे एग्जाम रे कंपटीशन रहि परिबो है ना तो कंपटीशन रहबा को हेले तम प्रिपरेशन को टॉप लेवल जानिबार अछि एंड आउट कथा जहाँ भी सार मैंने क्लास कर प्लीज अटेंड एवरीवन क्लास सुजाता मैडम है केटी सर भी नो ही इज आवर फेवरेट सर है ना क्लासेस के मिस करें सी जहाँ भी डेटा दौरान दैट्स वेरी इंपोर्टेंट राइट है ना तो मु जहाँ भी कर पारि आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू एंड से लेवल को प्रिपरेशन दे देवी सो दैट तुम एग्जामिनेशन गले यू विल फील दैट ओके हमें ठीक ठाक कर पारुछु राइट तापर द more you bleed in the practice session you will sweat less है ना सेटा proverb अछि हम भूली गली कहै पे right so before going to the session तो हम किछि जिंस देखि देबी है ना this is the Vedang civil services है ना so all तुम सब educators को देखि देथेबे ठीक अछि तापरे we are having this others batch on YouTube जोटा कि हम सब live दोछु तापरे this is the है ना एबे टाइम टेबल अछि है ना कौन अछि इन पॉलिटी रे मैम नउचंदी मु नउची करंट अफेयर्स विथ होल पीएसआर रिलेटेड एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एंड हां इंटरनेशनल अफेयर्स आर वेरी इंपोर्टेंट इन प्रीलिम्स है ना सेम स्टेटमेंट डायरेक्ट पछा दियंती ठीक अछि तापर हमर तापर अर्पिता मैडम का क्लास अछि इकोनॉमिक्स केबे तो भूलिबेनी एंड बिकॉज़ इकोनॉमिक्स इज द की काहेला बहुत पिला इकोनॉमिक्स को स्किप कर दियंती है ना but Avrita ma'am will clear the concepts. तापर चंदन सर geography, you know, geography is one of the favorite subjects in OCS. ताकि questions कोरिया को बहुत भलो भी लगे. चंदन sir will take care of that, and Sudita madam is there for other things, है ना, science and tech and all that. ठीक अछि. तापर विश्वास batch, like the trust batch, है ना. So prelims is around 4,500 and prelims plus mains is 9,999. Trust me, जदि मु तम पाखरे जदि तम जगह थांती ना मु नहीं थांती कोन 4,499 because I would have been immature है ना मु किसी जाननी okay मु prelims clear करी so I would have preferred this one but actually what I think it's not about the money you should go for the all बुझी पाछ नहले तमे okay so हेडा हमरो हे गेला so please enroll the session है ना I will take the current affairs session I will take it okay ठीक अछि these are all this some slide notes तुम देखि देथो ठीक अछि so मोडे जिंस देखौ छी how the questions are getting framed ठीक अछि how the questions are getting framed suppose this is the मोडे अकुमो नै छी कोठी कोला मो हिंदू रो नै छी हला this articles है ना this article preventing bleeds before they happen understanding prophylaxis in hemophilia care है ना जो जेहेतु मोर करंट अफेयर्स अछि ना I will take care I will have to transgress all the boundaries of like science and tech geography polity सब मते नवाक पड़ियो ठीक अछि आज का डेट रे हीमोफिलिया इज वन ऑफ द रेयर डिसऑर्डर जोड़ा कि हमरो कोन होची इंडिया या वर्ल्ड रे it's माने बहुत सारा पेशेंट्स they lose their lives है ना हीमोफिलिया ठीक अछि जस्ट रीड व्हाट इज देयर है ना
Hemophilia care is now moving towards advanced approaches, rebalancing the body clotting system. तो हम जानछो it's talking about the blood body clotting system. Suppose तमर किछि injury हे जाउछि, if you're injured, right? तमे जदि injury हे जाउछि ना, तो blood clot is very important. If blood clot जदि हबनी ना, कोन हबो? Then you will profusely bleed and it will result in death, है ना? एडा कोन होछि? किछि patients अछि वर्ल्ड रे जहार टिके भी इंजुरी हेले ना, दे प्रोफ्यूजली ब्लीड, है ना? तांकर ब्लड फ्लो स्टॉप हुए नाही, एंड फॉर दैट देयर इज अ ट्रीटमेंट कॉल्ड prophylaxis, है ना? prophylaxis like it's like prevention. तमे डायग्नोस करिवो, ओके, आई मीन द पेशेंट इज हैविंग हेमोफिलिसिस, देन वी आर गोइंग टू क्योर देम, है ना? वंस हेमोफिलिसिस एडवांस स्टेज पे पहुंचला परे, देन यू हैव टू गिव दैट क्यूरेटिव केयर. माने परे जोड़ा कोन करछथि, तुम जो केयर दियोति या तुम ट्रीटमेंट दियोति, हैला? सो हेमोफिलिया इज अ जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर, है ना? इट passes through the genes, है ना? which the blood doesn't clot properly due to deficiency in clotting factors. मु clotting factors को भी ऐसी deficiency in मन कोन, I just tell me vitamin K. Vitamin K is very important, है ना? Without vitamin ना, vitamin K your there won't be clot. माने को उडीर को होती रक्त जमाटा बांधिबा, राइट? ब्लड क्लॉट को रक्त जमाटा बांधिबा, राइट? सेडा कोनती ना उडिया रे. सो ब्लड क्लॉटिंग इज वेरी इंपोर्टेंट इन योर लाइफ, है ना? So this means that even minor injuries can lead to excessive bleeding and spontaneous internal bleeds. मु एक्चुअली ए जिंस काई क्वेश्चंस मु कहबी क्वेश्चंस केमिति फ्रेम होछि, है ना? इफ द क्वेश्चन लेवल गेट्स डिफिकल्ट ना, तमे को आई वोंट लेट यू टू लूज एनी मार्क्स, है ना? मु आगु कहबी क्वेश्चंस लेवल केमिति फ्रेम हे परिबो, ठीक अछि? कोन कहछि, आई मीन दिस इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, माने हेमोफिलिया with approximately 90% of patients in developed countries of prophylaxis. माने एबे 90% of patients in developed countries are given the treatment of prophylaxis. Before hemophilia they are given the treatment of prophylaxis. मतलब prevention is better than cure, right? कि जे जिंसो घटिया हेले घटी जम लागु जे घटिबो, then we have to give them prophylaxis treatment. जदि घटी सारछि तापरे proper treatment दिया जाय, ठीक अछि? So remember prophylaxis here, it is for the blood clot, and blood clot is not at all good. But किछि जगह suppose internal bleeding होछि, no, suppose हमरो जो organs होछि ता भीतर blood vessels को भी blood flow करिया कथा, organs से भी blood flow करिया कथा, but सेठी जदि blood clot हे जिवो, then that will lead to hemorrhage. बुझि पाछो? किछि जगह भलो भी न, किछि जगह भलो अछि. So I will come to that, ना? Okay, कोना इट कोन देजी इंडिया अचीव्स, एडा एक्चुअली केबे का न्यूज़ होला अप्रैल 25 2025. तो मो जो सब्जेक्ट अछि ना, आई विल गिव यू साइंस एंड टेक अचीवमेंट्स, एंड तमे आको मेंस रे भी लिखि पारिबो, ठीक अछि? इंडिया अचीव्स ब्रेक थ्रू इन जीन थेरेपी फॉर हेमोफिलिया, है ना? इट इज अपडेटेड ऑन अप्रैल 25 2025, ठीक अछि? तापरे जीन थेरेपी टू क्योर हेमोफिलिस, है ना? इंडियन साइंटिस्ट कंडक्टेड द जीन थेरेपी ट्रायल फॉर सीवियर हेमोफिलिया ए, है ना? द पार्टिसिपेंट रिसीव्ड ऑटोलोगस हेमोफिलिस सिस्टम सेल्स, ठीक अछि? एट कोन आंचो आम दिस इज आम जो आई विल टेक दिस, ठीक अछि? आम जो आई मीन वर्ल्ड रे हेमोफिलिया ए पेशेंट्स आर वेरी मच मैसिव, है ना? हेमोफिलिया ए पेशेंट्स. सो एबे कोन होछि, वी हैव सक्सेसफुली अचीव्ड ब्रेक थ्रू इन थेरेपी ऑफ हेमोफिलिया ए. काहे कि गोटे फैक्टर अछि, फैक्टर 8 देखो, आई विल टेक ए स्लाइड, ठीक अछि? देखो जो आमर जो ब्लड क्लॉट हुए ना, ब्लड क्लॉट जोड़ा हुए, है ना? वी नीड्स अराउंड 1 to 13 फैक्टर्स, ओके? 13 फैक्टर्स, ठीक अछि? 1 to 13 फैक्टर्स दरकार. रिसेंटली इंडिया कोन करछि, हेमोफिलिया ए जोड़ा अछि ता भितरे फैक्टर 8 फैक्टर सबोले मिसिंग थाए. आ गोटा हला हेमोफिलिया बी, ठीक अछि? ता भितरे फैक्टर 9 इज मिसिंग, है ना? मैक्सिमम पेशेंट्स are of this one, HA hemophilia A and B, ठीक अछि? So सबु आडे जो पेशेंट्स अछंती ना, they lack such factors, है ना? सपोज एग्जांपल कोन फैक्टर 1 कोन हे परिबो, फैक्टर 1 मु जस्ट कहू जानि था, है ना? 1 to 13 फैक्टर्स, इट इज लाइक फाइब्रोनोजेन, तुम सुनि था पढिथो फाइब्रोनोजेन, राइट? तापरे प्रोथ्रोम्बिन पढिथो, हैला? फैक्टर 1, हैला? सो एडा कोन दरकार, हम जो फाइब्रोनोजेन हे गेला,
तापर थ्रोम्बिन हे गला तापर कौन हे गला तापर दिस फैक्टर 8 हे गला है ना ऑल दिस आर रिक्वायर्ड फॉर द एसेंशियल ब्लड क्लॉटिंग जदि एटा नथिबो ना तमरा ब्लड क्लॉटिंग हेई परिबो नाही बुझी परछो all these factors are essentially required for blood clotting so we need this factor and एटा कौन होछि तो जो prophylaxis रे जो प्री ट्रीटमेंट जोटा हुए आ भीतर कौन करा जाए they used to give factor 8 treatment once you are affected by this hemophilia तापर कौन हो इंजेक्शंस दिया हो इंजेक्शन दिया हो कौन hemophilia a factor 8 रो इंजेक्शंस दिया जिवो factor 8 रो इंजेक्शंस दिया जिवो as we know 1 to 13 factors are very important for the blood clot ठीक अछि and worldwide रे China हैला China is the topper in hemophilia patients okay it's a rare genetic disorder काहेकि blood profusely माने जो bleed करछ ना it may I mean you will lose your life so China is number 1 and India is number 2 ठीक अछि तो एबे कोन होछि स्टेम सेल थेरापी यूज करी करी से माने एटा क्योर करूछंती है ना ठीक बायोलॉजिकल टर्म्स अछि स्टेम सेल थेरापी तमे सेल्स को नै करी ता भीतर तमे कोन कहयो जीन एडिटिंग करी करी ता भीतर योर इंजेक्टिंग फैक्टर 8 एंड ता भीतर पेशेंट्स क्योर होचंती दैट्स अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट राइट so this one it's what is hemophilia it's a genetic bleeding disorder काली के जदि क्वेश्चंस पछारदा what is hemophilia ना तमे ल्यूकेमिया या जानछो you know about the leukemia right that cancer blood cancer leukemia so सेडा मारी के आसीबनी okay the person doesn't clot normally because they lack clotting factors है ना special proteins that help stop bleeding so you need clotting factors that is protein to stop the bleeding है ना even a small injury can cause prolonged bleeding of internal bleeding especially in the joints and muscles so what it prevents the excessive bleeding by inserting factor 8 okay factor 8 insert करिकरी है ना कौन अछि हीमोफिलिया ए कौन डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 त माने कौन यू आर इंजेक्टिंग फैक्टर 8 विद इन द बॉडी हैला हीमोफिलिया भी कौन फैक्टर 9 ठीक अछि एंड वी नो फैक्टर 1 to 13 आर फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर ब्लड क्लॉट ठीक अछि तापर है ना जस्ट अ क्वेश्चन आनी छि मु तो मैं ट्राई टू सॉल्व दिस राइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कौन ओके 1 minute तो क्वेश्चन टा पढो एंड ट्राई टू करो तुम क्वेश्चन टा पढो एटा मु आनी छि सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ठीक है ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ओके ना क्वेश्चंस एमिति पढे ठीक अछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग prophylaxis in hemophilia and vitamins essential for blood clotting prophylaxis refers to the treatment given after a bleeding episode in hemophilia patients try kari pariyo prophylaxis refers to the treatment given after bleeding episode है ना मु prophylaxis कोन कहतली it's a prevention it's not a bleeding परे होने it's a prevention एटा बुझि परछ तापरे primary prophylaxis started before the age of 3 and before the any joint damage it's actually एटा at the starting रे होय जाय है ना primary prophylaxis जोड़ा कि हमरा स्टार्ट हुए माने ए जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर था prophylaxis helps prevent joint muscle damage and improve long term quality of life तापर आउट कोन अछि विटामिन के इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ब्लीडिंग क्लॉटिंग है ना विटामिन के तापर इंडिया मोर देन 90% ऑफ हेमोफिलिक पेशेंट्स आर ऑन prophylaxis थेरेपी ए जो कैस्टा अछि ना सो एटा टिकेट डाउट लगी परे दिस वन इज डाउट काहे 90% नो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 10% ठीक अछि 10% ऑन थेरेपी सो इंडिया कोन करछि prophylaxis पेशेंट्स को से माने आइडेंटिफाई करूछंती दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंड ट्राइंग टू गिव देम ट्रीटमेंट तो आंसर एडी कोन हे परिबो what can be the answer देखो prophylaxis refers to the treatment given after a bleeding disorder मु कोन prevention so you are not getting hemophilia ता पूर्व तुमको ट्रीटमेंट दिया जाउछ राइट सो वन तो हबोनी ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर राइट वन तो हबोनी तापरे ताले आंसर कोन हे परिबो 2 3 and 4 5 भी हबोनी एडा हबोनी देन एडा भी हबोनी तो एडा हबो बुझे पर सो
जस्ट गोटे क्वेश्चन तुमको फ्रेम कर चेष्टा करली है ना हाउ यू कैन आई मीन एम क्वेश्चन जब कल जो पचार प्रोफिलैक्सिस ना मुझे चाहूनी कि तुम एमि देखो सेमि ना कहीं एटा जो तुम पाई ना 2 मार्क्स ट्रस्ट मी 2 मार्क्स कैन तुमको मेन्स रो सीट दे देबो एटलीस्ट यू कैन राइट इन द मेन्स फॉर 2 मार्क्स ठीक अच्छे टेल मी you know vitamin A B C तार विटामिन ए फंक्शन कौन थिला माने जितल पढुथबो ना तमे आज तो एडा पढुछ ना तमे टिके साइड रे तमे देखि दो विटामिन ए रे फंक्शन कौन थिला बी रे फंक्शन कौन थिला सी रे फंक्शन कौन थिला बुझि पाछो सेही सब जिंस तमे स्टैटिक पार्ट भी कवर कर दबो ठीक अछि एटी विटामिन के कवर हो जाछ ठीक अछि एंड वी नो एंड आउट कथा विटामिन ए जो विटामिन जो के अछि ना these are useful for the factors 1 to 13 विटामिन के खाइले फैक्टर्स 1 to 13 आसी परिबो जो थरे वनटा कोन थिला फाइब्रोनोजन पढी थबो फाइब्रोनोजन पढी थबो फाइब्रोनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन तापर गोड अछि प्रोथ्रोम्बिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन these are useful for blood clot काहे की रक्त जमाट बांधिबा काहे की they will form the mesh and they will reduce the blood clot I mean they will reduce the bleeding and सेटी clot हे जिवो राइट तापर एटा गोटे क्वेश्चन थिला ठीक अछि try to attempt this question okay एटा सिविल सर्विस रा क्वेश्चन थिला it's not clear right ठीक है तुम ये क्वेश्चन करो इन एन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल conversion of prothrombin to thrombin is prevented by है ना the fourth option is heparin है fourth option if it is not visible है आर क्वेश्चन टा कलो in an undamaged blood vessel conversion of prothrombin to thrombin is prevented by एटा काई इंपोर्टेंट मु कहूची how it is done देखो जदी तमरो मु कोन कहूची जदी तमरो भितर जो ब्लड क्लॉट हे जिवो जदी तमर भितर ब्लड क्लॉट हे जिवो ना देयर इज अ मैक्सिमम चांस दैट यू विल बी डाइंग राइट तो आई मीन डेथ होबा चाहे ब्लड वेसल्स जो चलीबो ना तो विटामिन्स एसेंशियल विटामिन्स जो प्रोटीन्स पहुंचबो केमथि ठीक अछि सो यू नीड एटा फाइब्रोनोजन नो कैल्शियम नो फैक्टर 6 नो यू नीड हेपरिन है ना हेपरिन स्टॉप्स द कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन ठीक अछि एटा गोटे स्टैटिक पार्ट थिला ठीक अछि सो देखि दबो ठीक अछि हां एट तार आंसर अछि जो प्रीवियस रो देखि दबो प्रोफिलैक्सिस इज प्रिवेंटिव नॉट आफ्टर ब्लीडिंग दैट्स ऑन डिमांड थेरेपी तापरे एटा कोन स्टेटमेंट 2 प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस स्टार्ट बिफोर द एज 3 एंड बिफोर जॉइंट डैमेज तापरे एटा कोन प्रिवेंट्स जॉइंट मसल्स ठीक अछि विटामिन के इज क्रूशियल एंड इन इंडिया लेस देन 10% less than 10% एटा हला गवर्नमेंट डेटा अछि इट इज गवर्नमेंट डेटा ठीक अछि सो दिवाली सेलिब्रेशंस हेतला दिवाली सेलिब्रेशंस हेतला प्राइम मिनिस्टर शेयर्स द ग्लिम्स ऑफ हिज दिवाली सेलिब्रेशंस ऑन बोर्ड द आईएनएस विक्रांत ठीक अछि एटा अक्टोबर 21 न्यूज़ थिला आईएनएस विक्रांत यू नो इट कोन थिला आवर नेवी गार्डियन इन इंडियन ओशन पीएम मोदीज टॉप कोट्स देखो एक्चुअली जो दिवाली जो सेलिब्रेशन होता ना सो आई वाज मुझे कोट्स टा देखुली कि से कौन कहते माने आई मीन टॉप कोट वाज दैट आवर नेवी गार्डियन इन इंडियन ओशन आवर नेवी इज द गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन एटा से कहते मुझे शुणुली कौन से कहते तपर मन अच्छी आमर जो कौन थिला बांग्लादेश कौन कहते कि वी आर द गार्डियन ऑफ इंडियन नेशन एंड 7 सिस्टर्स माने द ऑडेसिटी यू कैन हियर राइट एबे आउट जिनस है कि आई मीन जो चावल आमठू नौतले दे आर टेकिंग दैट चावल फ्रॉम यूएई बुझे पार आज का डेट रे बांग्लादेश इज परचेसिंग चावल फ्रॉम यूएई ठीक अछि प्राइस एंड एट हायर प्राइस काहे से चावल आमे यूएई के पठाउछु सेटू से माने किनुचंती डायरेक्टली किनुना द सो कॉल्ड नोबेल लॉरेट रो इकोनॉमिक्स बुझा खाली तो पढुथली बुझी पारछु ठीक अछि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेलिब्रेटेड दिवाली विथ नेवल पर्सनल अब्रॉड इन आईएनएस विक्रांत प्रेसिंग देयर करेज एंड डेडिकेशन ठीक अछि एटा थला ये देखो मोर एटा थला पीएम मोदी
एटा एयरक्राफ्ट कैरियर थिला गोटे जिंस कोन कहे जानछ जितले एयरक्राफ्ट कैरियर ऊपर पढुछ ना दिस इज कॉल्ड हमर एबे फंक्शनली प्रेजेंटली हाउ मच एयरक्राफ्ट कैरियर इज फंक्शन म केतरे एयरक्राफ्ट कैरियर अछि इंडिया इज फंक्शनिंग राइट कोइ परिबो कोटेला कि आईएनएस विक्रांत आउठला विक्रमादित्य ठीक अछि ठीक अछि विक्रमादित्य we bought it from Russia है ना and this is indigenously built our 76% content is bought indigenously ठीक अछि yeah okay Vikrant रो 76% content is indigenously built ठीक अछि and PM मोदी एडी सेलिब्रेशन करथिले काई गलो एटा हला कि एटा अराउंड आर डिस्प्लेसमेंट टर्न अछि अराउंड 45000 MT हला 45,000 it's actually medium carrier group ना हमर जो यूएसए रे जो अछि यूएसए रो अछि they are having around 1 lakh ton 1 lakh million ton displacement यूएसए रे जोटा अछि रोनाल्ड रेगन हेगला और तीन तांगर 11 कैरियर ग्रुप अछि एंड इंडिया पाखरे दीटा अछि चाइना पाखरे केतो अछि जो दैट इज आल्सो 2 चाइना पाखरे भी दीटा अछि एंड डू यू नो द कांसेप्ट ऑफ ब्लू वाटर नेवी कि मत कहि परिबो what do you mean by the concept of blue water navy right कहीं इंडिया aspires to be a global power ठीक अछि एबिका डेट रे देखो this is Indian Ocean right हमको ना at least now we have two कोन डेटा aircraft carrier अछि at least in the next 6 years we are planning for 6 aircraft carrier एटा डिफेंस मिनिस्टर कहथिले मु कहनिथली ठीक अछि at least मु जो हमको जोना लागुची we can have one aircraft carrier here आ गोटे ग्लोबल देखो जदि तुम ग्लोबल सुपर पावर बनियार अछि ना तुमको बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर दरकार तो तुम वाटर को छाड़ी की तुम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को छाड़ी की यू कैन गो एनीवेयर आज का डेट रे यूएस रे जो कैरियर अछि दे आर सबवर्ड से मन सबवर्ड पैसिफिक अछि अटलांटिक अछि साउथ चाइना सी रे अछि सबवर्ड अछंदी एंड इंडिया रे कोन अछि इंडिया इज गार्डिंग इट्स ओन सीज बुझे परछो इंडिया इज गार्डिंग इट्स ओन सीज है ना तो एटा तो आमर एस्पिरेशंस कोन अछि we need to build more aircraft carriers so that we can be the guardian of ocean देखो गोटे महाशक्ति जदि बनेबार अछि ना if you are aspiring for a big global power ना तो हमको डिफेंस बजट बढ़ेबार भी अछि you have to increase the defense budget एबे डिफेंस बजट हमर केते अछि कोइ परिबो it's around 80 billion dollars बोधे 80 billion dollar अछि है ना we need to cross around 100 billion dollar this is very important है ना चाइना डिफेंस बजट अछि अराउंड 300 बिलियन डॉलर है ना किछि सोर्सेस रे मु पाइथली चाइना तंगरो डिफेंस बजट इट्स से बहुत माने कम करी देखांते बट एक्चुअली इट माइट बी अराउंड 500 बिलियन डॉलर या मोर देन दैट एंड यूएस रे केतो अछि यूएसए इज मोर देन दे आर अराउंड 1200 बिलियन डॉलर पाखो जदि इंडिया रशिया चाइना गोटे टाइम रे इंडिया रशिया चाइना मिसी जाउतले ना तथापि हम यूएस रे डिफेंस बजट हम मैच करि परनथु किंतु एबे धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू मैच है ना काहे कि बहुत सारा एडवर्सरीज अछि बहुत सारा एनिमी कंट्रीज अछि सो दैट वी नीड टू चेक ऑन दैट है ना दैट्स व्हाई एटलीस्ट वी नीड एटलीस्ट 2030 रे वी नीड 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना गोटे डीप इंडियन ओशन अछि गोटे बे ऑफ बंगाल रो दरकार गोटे अरेबियन ओशन रो दरकार आ जदि एस्पिरिंग ग्लोबल पावर जदि हबो त इफ यू वांट टू बिकम अ ग्लोबल ब्लू वाटर नेवी जोड़ा हबो देन you have to go Atlantic this is called Atlantic Ocean then Pacific Ocean को जिबार अछि then we need more ठीक अछि okay so this one है ना INS Vikrant India's indigenous aircraft carrier and naval milestone ठीक अछि एटा पढतो है ना आ उतरे कैच पॉइंट है कि आ उतरे कैच पॉइंट कोन अछि we are हमें जानछो India's next aircraft carrier ना कोन अछि that is INS Vishal है ना एटा केतोल कोन पचार दबो so don't forget it INS Vishal is the next India's next aircraft carriers ठीक अछि एटा हम अराउंड 5 to 6 years लागिबो so एटा जानि थाओ and right now displacement टर्न केतो अछि अराउंड 45000 आको कोन मीडियम कैरियर ग्रुप हला मीडियम कैरियर ग्रुप हमर एमिति ना कि जेतो 2022 रे जेतला विक्रांत इनॉग्रेशन हेता ना चाइना रो जर्नलिस्ट कहथिले कि इंडिया इज प्रोजेक्टिंग एज इफ दे हैव इनॉग्रेटेड 1 लाख मेगाटन
ton aircraft carrier. India has been doing that है ना. So ए जिनसटा कहते गोटे टॉन्ट मारिथिले है ना. इंडिया तांकर एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़े चढ़े के देखुछि. So these are the news है ना, जानि थाओ है ना. So आमर जदि ग्लोबल पावर एस्पिरेशन जदि, then we have to go for the HIDR operations, human assistant development. Apart from showcasing our firepower, then we have to do this humanitarian assistant development relief program है ना. तापर कोन अछि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी. आमर जो टेक्नोलॉजी अछि ना, द फायर पावर या आमर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जोड़ा अछि ना, इट इज डन बाय द टाटा ना. इट इज डन बाय द विक्रांत. जो इलेक्ट्रॉनिक्स फायर पावर टेक्नोलॉजी जोड़ा अछि ना, जोड़ा कि तुम जो फायर करिवो ना इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, इट इज डन बाय द टाटा. So that is why it is very important है ना. तब पीएम मोदी कौन कहले है ना. आ गोटे कथा, लेकिन इन अप्रैल 2025 इंडिया साइंड ए 63,000 crore डील विथ फ्रांस फॉर 26 राफेल मराइन फाइटर जेट्स. ठीक अछि. गोटे राफेल जेट अछि आ गोटे राफेल मराइन जेट अछि. दिस राफेल मराइन जेट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द कैरियर ग्रुप है ना. तो मैं जेहेतु हमरा स्मॉल 45,000 मिलियन टन कौन अछि बुझी परछो. So we can't afford the real Rafales. So ताप में कौन होची France कहले हमें 26 Rafale marine fighter jet दबो टिके जो थर की weight कम थबो and they can accommodate more Rafales. ठीक है, सी जिन सटा अछि. and हमें डील कासिंग करछो France. काली के जदी पचार दबो कि 26 Rafale marine fighter jets कोठो आनछो, it's obviously France. आउ एटा लगी स्टेटमेंट हला पीएम मोदी देथिले. Since 2014 Indian shipyards have delivered over 40 indigenous warships in warships and submarine with a new platform inducted every 40 days. ता माने कोन कोची every 40 days we are inducting a new warship. बुझी परछो, every 40 days. That's actually an achievement. 2014 दलाडा बहुत कम थिला. It was around 100 days रे गोटे warship launch होतला, माने इनॉग्रेशन होतला. एबे कोन होची every 40 days. This statement is very important. काली जे क्वेश्चन पचा दबो, I mean पीएम मोदी कोन कहले कहलो जेतलो आईआर क्वेश्चन पचारंदे ना 2023 रो क्वेश्चन आसला कि रशियन व्लादिमीर पुतिन कोन कहितले सेडा भी स्टेटमेंट हेतला से टाइम रे. जदि तुम के एटा एग्जाम देइथबो जो 48 कट ऑफ जातला, व्लादिमीर पुतिन कोन कहितले से स्टेटमेंट पडा आसला. सो इट इज जस्ट अ स्मॉल नंबर यार है ना, बुझी परछो. सो एटा टिके जानि थबो है ना. माने गोटे वारशिप वन वारशिप पर 40 डेज है ना, 40 डेज पर वन वारशिप. ठीक अछि. एबिका डेट रे 2014 आफ्टर 2014 we have inducted 40 indigenous warship and the rate कोन one warship per 40 days. So that is a good progress है ना. मुडे क्वेश्चन पचारिबी. Do you know about project 17? Project 17 I would hela project 17A. Anybody knows this? Project 17 and Project 17A. Okay, Project 17 देखो आगो को ये सब जिनसे मैं आगो पढ़े भी. Okay, I mean you should know this. Prelims रे इमते क्वेश्चन पचारे and mains जो IR जो पार्ट था PSI रे एडा सब लिखिया को पड़े. जब डिफेंस पोस्टर को तुम एनहांसमेंट करिवो ना, so you have to show that आमे केते I mean आमे केते फ्रिगेट्स किनुचु, केते कॉर्वेट्स किनुचु. एडा एक्चुअली केला एडाला फ्रिगेट्स हम जानि थो है ना. फ्रिगेट आरो सब केते डिस्प्लेसमेंट टन था 3500 टन था आरो डिस्प्लेसमेंट फ्रिगेट्स माने कोन छोटो नेवल वारशिप है ना. छोटो नेवल वारशिप व्हिच इज एसेंशियल. देखो जेतोले बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जाय ना, ता भीतर फ्रिगेट्स भी जाय बुझी परछो. सो दीज आर वेरी इंपोर्टेंट. तुम जदी ग्लोबल रे तुम पोस्टरिंग करिवो ना, यू हैव टू शो ऑल दिस. ठीक अछि. हां भितरे आउ कोन अछि, आई मीन दैट इज बिट कोन कहि परिबोनी तमे सब जिंस शो करिवोनी, बट एटलीस्ट एट ए मिनिएचर लेवल तुमको शो करिया पड़ियो आमा फायर पावर कोन अछि. एबेका डेट रे डू यू नो एबेका डेट रे नेक्स्ट दिस 1 मंथ रे ना केतरा नोटम इश्यू होई छै, केतरा नोटम बुझी परछो इंडिया इश्यू करछि. आई डोंट नो गोटे स्क्रिमिश हेई पारे आगु को काई गलो 80 गोटे नोटम इश्यू होई छै. तापर 80 हम प्रयागराज अछि सेंट्रल डिफेंस एयर कमांड अछि 80 गोटे नोटम इश्यू होई छै. 80 गोटे नोटम इश्यू होई छै. तापर नॉर्थ ईस्ट रे बांग्लादेश बॉर्डर पाखे नोटम इश्यू करंटली 4टा नोटम इश्यू होई छै. एडा कोन रोमियो नोटम 80 कोन मिसाइल टेस्टिंग हो 80 नोटम इश्यू होई छै. 80 सर्क्रिक पाखे गोटे नोटम इश्यू होई छै. इंडियाज बिगेस्ट मराइन इंडियाज बिगेस्ट मिलिटरी ड्रिल चल छै कोन ताते राफेल अछि, मिग अछि, सुखोई अछि, सब से
समस्त बस एक्सरसाइज करूछन देबे ए पाखरे सर्किट कथा मु नेक्स्ट क्लास रे कहबी तार हिस्ट्री कह देबी तुमको सो दैट तुम जानि परियो तुम कोन केम चलिवो ठीक अछि सो टिके एक्सटेंसिवली हम कवर करछु ओके आ गोटे थिला कि मु बुझी परनी आ गोटे थिला कि हमर गोटे प्रोजेक्ट 52 पता थिला जो हम डीजल इंजन जो डीजल पावर्ड सबमरीन गोटे सबमरीन गोटे प्रोजेक्ट थिला वा डीजल पावर्ड सबमरीन जो प्रोजेक्ट नाडा भूली गली तापर आ गोटे अछि कि हमर न्यूक्लियर कैन यू टेल मी व्हाट इज द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वी हैव राइट नाउ कोडा अछि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडिया पाखरे जोटा कि इंडिया बहुत बूस्ट करथला गोटे जानथबो कोडे हला प्रोजेक्ट वर्षा है ना प्रोजेक्ट वर्षा एटा सब डिटेल आगु कहबी आ भी अछि आईएनएस इफ यू नो आईएनएस ओके नोटम मतलब नोटिस टू एयरमैन नोटम मतलब नोटिस टू एयरमैन काहे की तो देखो तुम जतले एटी मिलिट्री ड्रिल करछो ना एक्सरसाइज करछो ना तो ए जो एयर स्पेस अछि ना तुम यू आर इश्यूइंग ए नोटम टू द सिविलियन एयरक्राफ्ट तुम ए जगह को आसीबो नाही फ्लाइट तुम ए जगह तुम जदी गुजरात जीवो तुम एमिति फ्लाइट रे जीवो यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन ठीक अछि एटू जदी माने एटू जदी नोटम इश्यू होई जे को शिप को फ्लाइट जाई परिबो नाही सेम फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम माने एडा कोन एडा हम पोस्टरिंग करछु एबे हम आसाम पाखरे जो आसाम माने आसाम जोडा नॉर्थ ईस्ट जोडा अछि विथ रेस्पेक्ट बांग्लादेश बॉर्डर सेठी में नोटम इश्यू करछु आउ सेंटर इंडिया रे भी नोटम इश्यू कर दैट व्हाट वी आर फ्लेक्सिंग आवर मसल जदी इंटरनेशनल रिलेशंस से जदी देखिना वी आर फ्लेक्सिंग आवर मसल्स राइट होप यू गॉट इट आउला प्रोजेक्ट वर्षा रे आईएनएस अरिहंत हमर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी सपोज वी आर अटैक्ड if we are getting attacked from the land sea anywhere है ना यदि हम ऊपर अटैक हो जाय छै ना एंड हमर जदी लैंड रो अटैक करि पारु ना देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट हमें सबमरीन रो अटैक करि परिबो एंड जदी हम सबमरीन रो अटैक करिबो ना हां दिस वन ठीक अछि आई मीन देखो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड राइट है ना दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड हमरा एती कैपेबिलिटी रखिया दरकार जे कि हमें सबमरीन रू अटैक कर पारे जदी हमकू इफ चाइना इज हिटिंग अस है ना लैंड रू या शिप रू एटलीस्ट हमर जदी लैंड र कैपेबिलिटी नाही ना एटलीस्ट वी शुड हैव अ सबमरीन हियर एटू से माने बेजिंग को भी टारगेट करे कैपेबिलिटी रखिया कथा सो दैट इज कॉल्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जोडा कि आईएनएस अरिहंत पाखरे भी अछि ओके दैट इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एंड सेटा आउरी बेसी आसीबा को ठीक अच्छे भगवान करे न हो बिकॉज न्यूक्लियर वॉर इज वेरी डेंजरस वी नो व्हाट हैपेंड इन 1945 जापान रे हेतला सो आई होप से दूर को जीवनी बट वी नीड ऑल दिस थिंग्स है ना गोटे डिटरेंट दरकार जदि एटा थबो देन इफ गोटे हला कि जॉन नैश प्रिंसिपल गोटे अछि इफ यू आर इक्वली इक्विप्ड विथ पावर देन नाइदर विल अटैक है ना नैश इक्विलिब्रियम थ्योरी कोनथे ठीक अछि दिस वन तो ओके तो एडा अच्छी पीडीएफ अच्छे आई विल गिव यू है ना गोवा लिबरेशन डे 1971 वॉर इंडो आईएनएस विक्रांत यूज हेतला 1971 वॉर रे जो थरे कि हमर कराची पोर्ट को उड़े दिथलु से टाइम रे है ना कराची पोर्ट वाज बर्निंग फॉर 15 डेज से तो हेतला तर डॉक्यूमेंट्री अच्छे देखिबो ठीक अछि दिस वन एंड हां मन रखिबो कि हमरा राफेल मराइन फाइटर जेट्स हमें परचेज करियो फ्रांस रो within the next 3 to 4 years deal के 63,000 crore it's how much 6 to 7 billion dollars deal एटा ठीक अछि सो एटा एक क्वेश्चन अछि एटा जदि जे माने हाइलाइट्स देखिबे पॉज द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर ठीक अछि बहुत माने सिंपल क्वेश्चन अछि ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ठीक अछि व्हाट इज द मोटो ऑफ आईएनएस विक्रांत स्ट्रेंथ थ्रू द सी Jayam Sam Yuddhi Spridha I defeat those who fight against me guardian of the eastern seas एटा बहुत इजी क्वेश्चन तापरे courage beyond waves representing bravery and endurance across the sea what is the motto of INS Vikrant है ना हम भाबुतले कि बहुत किछि देबी माने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो एम द इजी क्वेश्चंस भी पड़े एंड हां आर आंसर हैला तुम देखि दियो हम ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस है ना अटेम्प्ट कले जानि परिबो कि क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस भी पड़े सिंपली या तुम्हारा वन डे एग्जाम रेडी पड़ी पारे काहेला आईएनएस विक्रांत वाज इन न्यूज़ ठीक अछि
So एटा हला कि जयम साम युद्धिस प्रथा, I defeat those who fight against me. It was a quote from with which Veda? No, this is Guardian, not Guardian, this is B. कोई परिबो जयम साम युद्धिस प्रथा, I defeat those who fight against me. It was a quote from which Veda? साम वेदा या ऋग वेदा, बाकी जो यजुर्वेदा या आउ किछि वेदा अछि, राइट? एठाला इट वाज अ कोट फ्रॉम ऋग वेदा, ठीक अछि? जस्ट रिमेंबर दिस, हाईली फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन पचार दबो, एंड आई डोंट वांट यू टू लुक अपवर्ड इन द एग्जाम, को भी एग्जाम दोचो, एंड ट्रस्ट मी मो क्लासेस इज वैलिड फॉर वन डे एग्जाम्स आल्सो, ठीक अछि? है ना? इन द क्वेश्चन इजी क्वेश्चन दिला मो चाहूतली कि टेस्ट we should test your knowledge, right? तापरे एटा गोटा न्यूज़ देखि तबो, IT ministry proposes mandatory labeling of AI generated content. देखो एटा न्यूज़ थिला, IT ministry proposes mandatory labeling of AI generated content on social media, right? काहे कि we know that हमर जो आज का डेट जो जनरेटेड कंटेंट डीप फेक वीडियोस जोड़ा आछी ना, इट हैज बीन रूइंग द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल, ठीक अछि? याद अछि रश्मिका मंदना ओटा अनफॉर्चुनेट वीडियो वायरल हेतला, एंड सी ट्विटर भी कहितले कि जदि मु कॉलेज स्टूडेंट थांती ना, आई वुड हैव डन समथिंग एल्स, इवन आई कुड हैव सुसाइडल टेंडेंसी आसंदा, बट शी इज एन सेलिब्रिटी, शी ओवरकम दैट, है ना? तो आज का डेट रे गवर्नमेंट वांट्स टू एबे कोन गोटे ड्राफ्ट आछ, नॉट आई मीन ड्राफ्ट अमेंडमेंट आछ आईटी रेगुलेशंस रे, ठीक अछि? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रे गोटे से ड्राफ्ट अमेंडमेंट अछि. दिस ड्राफ्ट इज माने तमे नवंबर 5 जागे बोले, नवंबर 5 जागे तमे सजेशन देई परिबो, ठीक अछि? है ना? The draft amendment to the IT rule requires social media companies to allow users to self-declare if the content they uploaded is AI generated. In cases where users fail to make such declaration, platform must proactively detect and label AI generated content. My question is that do you know which which country is the first one to bring laws on AI? ठीक है, which country was the first one to bring laws on AI? That is European Union. एटा जानी था वाला, it's a very static portion. European Union was the first union, not country, union bring laws on AI. ठीक है, AI specific एटा, ठीक है? तापर हमरो ड्राफ्ट proposals कोन अछि? Government proposes mandatory labeling of AI generated content. The Electronics and Information Technology has proposed mandatory disclosure of labeling of AI generated synthetic content. Actually कौन है जो एबे जो content है ना, synthetic content और definition आसी चे. Government has given the definition of synthetic content. ठीक है जी? एबे जो proposed amendment है ची. आउट है लगे. एट why I am showing this because अभी तक किछि जिनसो ची जो data आची we need माने government पचारि परिबो ए जो questions पचारि परिबो. A draft amendment to the Information Technology requires social media companies to allow users to declare AI gen. देखो जब तुम AI generated video आनछो ना, तो ताबी तो watermark भी रहिबा कथा. AI generated video रे watermark रहिले, हाँ this is deepfake watermark generation. So that is very important. आ गुटे कथा हला कि if users fail to declare, platform must proactively detect and label such content. The declaration must cover at least 10% of the content area. 10% of the content area to the text, video and audio. देखो जदि तमे ओके जदि ठीक छै, देखो जदि तमे गोटे वीडियो बनौछ ना, गोटे वीडियो जदि बनौछ ना, ता भीतर एटलीस्ट 10% of 10% of the जो स्क्रीन स्पेस अछि ना, you have to label it as an AI. 10%. आउ जदि तुम ऑडियो छाड़छ ना, ऑडियो छाड़छ ना, सपोज गोटे पॉडकास्ट करलो, AI जनरेटेड पॉडकास्ट करलो, 1 hour रो पॉडकास्ट अछि, तो you have to say that within 6 minutes 60 minutes ना, within 6 minutes you have to show that this podcast is AI generated. बुझी पारछो? With podcast is AI generated. Yes, चाइना कौन एबे चाइना कौन करछि है ना, no degree no reels. It is very important. No degree no reels. कहीं गलो एडा एबे न्यूज़ बाहर छी, after 1 year you will forget. After 1 year you will forget this. But एते जानि चाहो, China was the first country
for introducing no degree no rules है ना तो एटा बुझी पाला तो 1 hour जो पॉडकास्ट अछि 1 hour तो ऑडियो कंटेंट अछि ना जदी से दैट इज AI जनरेटेड within 6 minutes you have to tell that 10% of coverage देछि 10% of bandwidth देछि तुमको कहजी this is AI generated content आउ स्क्रीन प्रेस थिले 10% ठीक अछि सर तुम देखिया को पड़िबो जेमति हम स्क्रीन जेम चलछि दैट इज ओनली जो प्री प्लस मेन जोडा दैट इज ओनली 2% बट एटलीस्ट आउट टिके ऊपर जीव दैट इज ट्रू ना दैट 5% हबो जोडा कि हम स्क्रीन जो फ्लैश होछि दैट इज 5% एबे कोन को 10% करिया पे कहउछंती ठीक अछि दिस वन तो द प्रपोजल रिक्वायर्स intermediaries to ensure that synthetically generated information is prominently labeled or embedded with permanent unique metadata and identifier देखो आमे एडी कोइसी को metadata कथा कहरा metadata माने कोन द सोर्स बुझी पा जो गोटे फोटो तुम न्यूज है ना तार गोटे सोर्स कोड थाए राइट जदि तुम सोर्स कोड पाई गलो ना यू कैन ट्रेस द कल्प्रिट जदि किछि फोटो माने डिफेक्ट फोटो अछि तार जदि तुम सोर्स कोड पाई गलो ना पुलिस कैन ट्रेस द कल्प्रिट ठीक ताको कोन मेटाडाटा इज वेरी इंपोर्टेंट इट ऑलवेज डिफाइन योर सोर्स ठीक हो तो से कौन कहे प्रपोजल रिक्वायर इंटरमीडिएट्स टू एंश्योर दैट सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन इज परमानेंट लेबल्ड और एम्बेडेड विथ मेटाडाटा कहीं जदि से कंटेंट को जदि माने के रिट्रीव करियो ना जो साइबर एक्सपर्ट अछन ना दे कैन गेट द मेटाडाटा सेठी से माने कोन केस को क्रैक कर परिबे कि फेक वीडियो फैलेतला इफ दैट इज कोन माने कोन दैट इज वेरी हार्मफुल टू द अदर पर्सन बुझे बा जेमति रश्मिका मंदना केस रहितला ठीक अछि हम जानि पनथि सेटा कोड आस्तला दिस आइडेंटिफायर मस्ट बी विजिबली डिस्प्लेड अछि the ministry has sought feedback on the draft until November 6 तो तुमको जदि किछि ड्राफ्ट रे किछि फीडबैक दबार अछि ये गो टू द माने मिनिस्ट्री रो वेबसाइट रे जिवो सेठी November 6 रे तुमको प्रपोजल दबार अछि ए जिंसो आनंतो ड्राफ्ट रे बुझि परछो आफ्टर दैट इट विल गो for the approval है ना this proposal signifies a shift from the ministry's previous stance with existing impersonation penalties बुझि परछो तो आगु को तमे एते जो फेक वीडियोस उडा करूछो if that is impersonation हेले then you'll be liable for the penalty ठीक अछि तो किछि सेक्शंस अछि जोडा कि very important as per the UPSC या OPSC perspective अछि I told you ना मु जदी किछि जिंस नेबी ना I will connect to the core मु ताकू core रे भी कनेक्ट करबी है ना कि IT सेक्शन सिंपलीफाइड जदी के OPSC में पढ़थे ना they might be aware of such sections ठीक अछि section 66 cyber offenses like hacking identity theft and I would question है मोटे क्वेश्चन पचारिबी जो information technology act 2000 अछि जोडा अछि how many times it have been amended है ना how many times this IT act have been amended एटा तुम पे क्वेश्चन अछि जदी कहि पारे तो भलो था ठीक अछि ए जो किछि किछि की सेक्शंस अछि ना you have to remember this है ना section 66 cyber offenses like hacking identity theft है ना Section 66 रे किछि क्लॉसेस अछि if it is related to hacking then you are liable for the punishment ठीक है 66A is very important काहे कि sending offensive or harmful messages online actually कोन है it was section 66A एबे आ नाही है ना सुप्रीम कोर्ट struck down this section एटा मन थबो श्रेया सिंगल केस मन अछि श्रेया सिंगल केस हला एटा इज वेरी इंपोर्टेंट ओके 2015 रे शेयर सिंगल केस टा मन रखतबो व्हाट इट स्ट्रक डाउन 66A क्वेश्चन पछारे है ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस हैव बीन स्ट्रक डाउन बाय द शेयर सिंगल केस दे दो 66 66A 69 79 एटा सब दे दो सो इट्स अ फैक्चुअल डाटा एटा आगु काम आसी ठीक होजे सेक्शन 69 गवर्नमेंट कैन ब्लॉक वेबसाइट्स और कंटेंट फॉर सिक्योरिटी पब्लिक एंड ऑर्डर देखो किछि हमर एबे कोन हेतला मैं कटकर दंगा हेतला है ना कटकर दंगा हेतला देन सीएमसी ऑर्डर करले किछि सेंसिटिव कंटेंट को ब्लॉक करे पे राइट किछि सेंसिटिव कंटेंट सो दे यूजेस सच सेक्शन 69 है ना से प्लेटफॉर्म रो रिमूव हे दो एक्स रो रिमूव हे जो आउट हला कि सेक्शन 79 एडा देखो सेक्शन 79 देखो एबे गोटे डिबेट कहबी एक्चुअली सेक्शन 79 सेफ हार्बर फॉर प्लेटफॉर्म्स माने सपोज एडा एक्स जोडा ट्विटर कहंदे एठो मैं किछि पोस्ट करली ना किछि ऑफेंसिव जिंस पोस्ट करली ना तो आ पई दाई केवल मु नॉट एक्स ताको कहंदे 79 सेक्शन 79 बट हां जदी ऑफेंसिव जिंस पोस्ट करा जाय एंड गवर्नमेंट रो नोटिस रे आसिला देन गवर्नमेंट विल इश्यू एन ऑर्डर अंडर 69A section 69A please remove the offensive post
प्लीज रिमूव द ऑफेंसिव पोस्ट 69A ठीक अच्छे तापर अंडर 79 क्लॉज 3 क्लॉज B रे दे हैव टू रिमूव द पोस्ट बुझी पारछो 79 कोन गला माने इट वाज आई मीन सेफगार्ड थिला 79 टा वाज सेफगार्ड फॉर द प्लेटफॉर्म काहे फेसबुक रे तमे किछि भी ऑफेंसिव पोस्ट करछो दैट इज नॉट आई मीन तापे फेसबुक दाई नो तापे तमे दाई यू विल बी क्रिमिनलाइज्ड बट यदि गवर्नमेंट जानि के कहउची प्लीज यदि तापर फेसबुक को कहा जाउचे प्लीज रिमूव दैट पोस्ट आउ यदि फेसबुक जदि तुम ताको रिमूव भी करिवोनी देन एज पर 79 क्लॉज 3 क्लॉज B रे से माने पनिशमेंट पाइबे एंड गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर इश्यू करूची 69A रो ऑर्डर इश्यू करूची ठीक अछि एबे कोन हेतला एक्स वर्सेस तुम जदि न्यूज़ पढितबे एक्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि एडा थिला एक्चुअली कोन 69A रे जो गवर्नमेंट जो ऑर्डर इश्यू करे ना ता भीतर कमिटी थाए कमिटी रे जो गवर्नमेंट जदि किछि ऑर्डर इश्यू करिबो ना कमिटी को से जिंस जीवो then they will try to remove it ebe x कोन कहला गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इश्यूइंग ऑर्डर्स अंडर 79 क्लॉज 3 क्लॉज B बाईपासिंग 69A ठीक अछि तंग पर तको रिजेक्ट भी करा जाइतला ठीक अछि ए तो टिके मन रखतो काहे एडा सब मेंस कंटेंट भी भलो अछि मेंस कंटेंट तो मैं लिखि पारिबो मेंस कंटेंट पे मैं लिखि पारिबो ठीक अछि सो एडा मन रखतबो प्लेटफॉर्म लूज सेफ हार्बर जदि कंटेंट रिमूव करा पे कोइ गवर्नमेंट एंड इफ यू आर नॉट रिमूविंग देन प्लेटफॉर्म लाइक एक्स फेसबुक लूज हार्बर इफ दे इग्नोर गवर्नमेंट नोटिसेस अबाउट इलीगल कंटेंट बुझी पारछो तो सो एंड सेफ हार्बर कोथरे 79 एंड गवर्नमेंट इश्यू कोथरे करछि ऑर्डर 69 रो इश्यू ऑर्डर करछि ठीक अछि 69A एटा सब ऑर्डर इश्यू करा जाय थला तो मैं एटा जानथबो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन 79 ओके तो दिस आर द आई मीन ट्रिकी क्वेश्चंस अछि जोता कि तुमको जानिया कथा सब जिंस बिकॉज सिविल सर्विसेज तो ए सब जिंस न जानले देन यू माइट लूज मार्क काई कहै हम क्वेश्चन देखौ आगो देखो ए क्वेश्चन टा करो अंडर द ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस and digital media ethics code rules 2021 social media platform must ensure that AI generated content is clearly labeled. According to the proposal, the user declaration of AI generated content must cover, can you tell me what is the answer here? 5% of the content area, 10% of the content area, 15%, 20%. Question empty pocharibo, right? Try to answer this question na. Our answer is 10% na, at least 10% of the content area 10% ठीक अछि so this is the answer है ना या जदि मन नथो त 5% मारी आसीबो या you will leave the question and कोनला 2 marks तोर पड़ेला जदि तमे भूल करलो approximately 2.66 कटि जिवो लिटरली बुझि परछो एडा थिला कि हमरो ये सेक्शन 66A एडा देखो क्वेश्चंस को लेवल रे पचार छथि क्वेश्चंस को लेवल रे एडा थला केरला रो स्टेट पीसीएस क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है ना सेक्शन 66A of IT Act 2008 is related with sending offensive measures, hacking computer system, failure to maintain records using passwords of another person. एडा कोन थिला सेक्शन 66A बुजोडा कहउतली श्रेया सिंगल केस राइट श्रेया सिंगल केस रो सेक्शन थिला एटा this is that's why it is very important कहला क्वेश्चंस एठो एमदी पचार छथि सेक्शन 66 एडा थिला श्रेया सिंगल केस ए सब केस स्टडीज हमें पढू माने टिके कम लेवल रे पढू बट पढू एडा सो दैट एडा कोन हमरा मेंस आंसर रे भी एडा लिखा जाय ए सब केस सोडा एडा हला सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस हला एक्चुअली कोन हेतला सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस इज नॉट एट ऑल डिफाइंड किछ भी तमे ताइ लिखाला ऑफेंसिव मैसेज किछ भी हे पर इट इज नॉट एट ऑल डिफाइंड तो सेति पई सुप्रीम कोर्ट ए 66A को स्ट्राइक डाउन कर देतला राइट ठीक अछि एडा मन रखिबो 66A 79B 79 safe harbor protection is 79 79B if a government issues an order then if you don't remove then your safe harbor will gone forever 79B जोड़ा अछि है ना I know it's a bit tough but तुमको से लेवल रे प्रिपरेशन करिया को पड़िबो है ना तापरे anybody heard about this news है ना explained Saranda's forest कहीं एमि क्वेश्चंस कहीं दोचा जो तमे जानत हो कि क्वेश्चंस को केमिति आसी परिबो ठीक अछि
how the questions will be framed है ना civil service is not at all easy है ना one day exam हेगला तो मैं fact पढ़ी गलो ठीक अछि but civil service भितर टिके deep depth जिबे कहीं कहलो and I hope मुझे भी पढ़े भी UPSC पे भी applicable सेटा ठीक अछि explained Saranda's forest and the case for a sanctuary before Supreme Court है ना actually Supreme Court directed the Jharkhand government to notify an area of 314 square kilometers as wildlife sanctuary while hearing a plea which sought compliance with July 22 judgment of NGT है ना Eastern Bench देखो काली को जब पचारियो ना Saranda forest काली को जब पचारियो where is Saranda forest it is at Jharkhand है ना एड़ा तो हमको मन रखियार अछि है ना ता भीतर गोटे पीवीटीजी भी अछि सेडा भी आगु कहबो पीवीटीजी भी अछि एंड अदर एसटी ट्राइब्स भी बहुत सारा अछि ठीक है why Saranda forest was not declared देखो they argued that Saranda forest had already been declared a game sanctuary is nothing else that is wildlife sanctuary आसा 1972 पर से जो टर्म टा आसिला आगुर कोन कहउतले गेम सेंचुरी कहउतले है ना से कोन कहउतले they argued that Saranda forest before independence okay already been declared as game sanctuary 1968 actually 68 ता पूर्वरी डिक्लेयर हेतला एटा जो 68 लिखा है ता पूर्वरी डिक्लेयर हेतला and undivided Bihar before Jharkhand was carved out in 2000 किंतु एक्चुअली कोन अछि जो रिकॉर्ड्स जो ऑफिशियल डेटा जो रिकॉर्ड्स अछि ना ता भी से देखो ना कि इट्स अ सेंचुरी बुझी पारछो ऑफिशियल डेटा रे सेंचुरी नाही बट प्रीवियस डेटा रे कोन थिला इट्स अ गेम सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केबे आसल 1972 रे सेतोला कोन माने जो हमरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कांसेप्ट पूरा और स्ट्रेंथन हे गला ता पूर्व कोन थिला गेम सेंचुरी थिला बट दैट फॉरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड एज अ गेम सेंचुरी तापर it was expected that after the introduction of 1972 act that forest should have been a wildlife sanctuary but सेटा हेलानी बुझी पारछो सेटा होनी कहीं under the wildlife protection act 1972 any area declared as a game sanctuary before 1970 would automatically being a deemed wildlife sanctuary so सेमान कहउछन द एक्चुअली एटा सुप्रीम कोर्ट जायतला जो पेटिशनर अछि ना से कहउछ ना 1968 रे it was a game sanctuary है ना 1968 it was a game sanctuary but at the same time 1972 रे तला हमरो wildlife sanctuary list आसला it was not there एडा Saranda forest was not there तो कोन आला it loses its protection तल कोन हबो habitat destruction start हबो illegal mining हबो तो सेठिकार ecological disbalance हे जिवो right सेडा केस चलता when NGT investigated found no official देखो no official government records forest pakare government records tha or gazette notification providing that such a game sanctuary was even legally declared in 1968 se ko 1968 declared hoche but official record nahi 1968 in other words there was no documentary evidence no formal notification nothing was there hela kichi nathila the result kon hochi so Saranda could not automatically become a sanctuary mane sanctuary hoi parni then setu kon hobo illegal deforestation start habo mining start habo then it will lead to pollution it will lead to chaos displacement habitat destructions everything ठीक अछि so एबे सुप्रीम कोर्ट कोन कहै छै झारखंड गवर्नमेंट शुड री एग्जामिन है ना किछि फॉरेस्ट को तमे प्रोटेक्टेड एरिया भाबरे तुम कवर करिया पड़िबो ए जिनसाडा से कहै है ना why it is biodiversity rich area because it is known as Asia's sal forest okay ठीक अछि तमे जानि थाओ कि Saranda जो फॉरेस्ट है इट इज एशियाज लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट सो इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट ताको कहउदे शौर्य रोबस्ता है ना एडा हला तार साइंटिफिक नेम एंड साल फॉरेस्ट यू नो ना सो काली के जो Saranda फॉरेस्ट पचा दो व्हाट इज इट इज फेमस फॉर द साल फॉरेस्ट है ना आउ किछि ऑप्शंस मारिबन तापरे it is home to this one तेंदु मावा and all these things everything is there आज का डेट रे सिंगम भी पड़तला है ना with छोटा ना पर गोटे ऑप्शंस से गोटे क्वेश्चन थिला पड़तला सिंगम ऊपर क्वेश्चन पड़तला बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक जोटा कि हमरो सिविल सर्विस पचातला बट नाउ इट इज द पार्ट ऑफ नाउ नो कोन सब इट इज द पार्ट ऑफ सिंगम एलिफेंट कॉरिडोर इंक्लूडिंग ओडिशा एंड झारखंड अरे देखो एडा जदि एडा हमर ओडिशा ना एडा हमर मयूरभंज एरिया रे एडा पूरा फॉरेस्ट एमित लागि छै मयूरभंज एरिया रे फॉरेस्ट एडा झारखंड ना एडा झारखंड ए फॉरेस्ट पूरा एमित जाइ छै तो एलिफेंट माइग्रेशन हो जेहेतु सेठी इकोलो सेठी बहुत कोन सेठी माइनिंग एक्टिविटीज बेसी होछ ना एलिफेंट माइग्रेशन बेसी होछ ओडिसा को दैट्स अ आई मीन सेटा गोटे देखाइतला तापर कोन रिवर इकोसिस्टम कोइन एंड कारो जदी मन रखियो त मन रखो तापर डेंस कैनोपी अछि सेटा ज्योग्राफी सर पढे देबो कैनोपी कोन अछि सब पढे देबे कैनोपी मतलब फॉरेस्ट कवर है ना
ट्रेडिशनल कम्युनिटी लाइक हो एंड बिरहोर देखो एठी गोटे पीवीटी जी अच्छी जस्ट रिमेंबर बिरहोर है ना बिरहोर इट्स अ पीवीटी जी है ना बिरहोर इज अ पीवीटी जी मेनली फेमस फॉर द साल एक्टिविटीज है ना से माने कोडी रुहंती एट सरंदा फॉरेस्ट सो रिमेंबर बिरहोर इज अ पीवीटी जी दे आर फाउंड एट आदित्स फॉरेस्ट है ना सरंदा फॉरेस्ट तो कैच पॉइंट ला बिरहोर काली के क्वेश्चंस किछि भी फ्रेम है पारे बिरहोर ऊपर फ्रेम हे परिबो स्टेटमेंट दे पर साल ऊपर स्टेटमेंट आस परिबो तापरे से कहबो कि दैट फॉरेस्ट इज स्प्रेड इन बेंगल एंड झारखंड जदि दे दबो देन दिस इज रॉन्ग एटा कोडी दैट फॉरेस्ट इज स्प्रेड इन झारखंड ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ तुम टे आप रिसर्च कर दो रिसर्च मैंने कौन देखी दबो से को फॉरेस्ट कोड सारंदा फॉरेस्ट ठीक अच्छे ठीक अच्छे तो झारखंड एक्चुअली प्रॉब्लम कौन है आई हैव टू वाइंड अप दिस सेशन एक्चुअली प्रॉब्लम है कि जदि आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जदि बने दौच ना ये अच्छी तुम देखीद जदि इफ गवर्नमेंट इज डिक्लेयरिंग एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना प्रॉब्लम कौन है दैट इट विल क्लैश विथ पेसा एटा रिमेंबर एटा शेड्यूल 5 रे अछि पेसा फॉरेस्ट राइट एक्ट माने जो माइनर प्रोड्यूसिंग पई जो ट्राइबल लोक जानती दे कांट गेट इट बुझी पारछो पेसा संग क्लैश हो तो सेति पई गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट रे तांगा प्ले देछ है ना सो एटा लाउट प्रॉब्लम है ना तापरे हां सॉरी है ना आउट मेन थिंग हला इट हैबिटेड 26% ऑफ द कंट्रीज टोटल आयरन ओर रिजर्व्स ओके सो एटा अच्छी पढ़ दो आई हैव टू वाइंड अप है ना तो ये जिनसटा अच्छी तो अच्छे मु आई विल कंटिन्यू दिस सेक्शन है ना नेक्स्ट क्लास में तो कंटिन्यू करी ठीक अच्छे so I'm lagging time ठीक अच्छे आई नो इट्स अ बिट टफ बट क्वेश्चन सेमती आसे से लेवल को डेप्थ को जीवा पड़ो ना यू माइट लूज है ना सिविल सर्विस इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी इट नीड्स डेडिकेशन हार्ड वर्क है ना हार्ड वर्क तो बहुत इंपोर्टेंट अच्छे एंड स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपोर्टेंट राइट आई नो टिके सेशंस टिके ओवरलोड है अच्छे बट आई वांट टू माने तमे सही भितरे कोन एक्वेंटेड हे जाओ मुझे जो क्लास नहीं डेप्थ रे नेबे राइट ओके आई विल वाइंड अप दिस सेशन हैव ए गुड डे अन्य सार को क्लास उडा अछि सो प्लीज क्लास अटेंड करिवो ठीक अछि ओके थैंक यू